Yeah, dear, all of you are there? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, okay, we'll start with the gas carriers. So, gas carriers again, what all basic things are there? Hazards, type of ships, type of tanks, and few equipment like your re-liquefaction plant. So these are the things which we will cover up in these gas carriers, and then basically a simple procedure कि gas carriers का procedure. Now you know tankers पे जैसे कि we cannot start loading if the tanker comes new or from the dry dock. So there we have to do the inerting. All tanks are inerted, then only the loading starts. So यहाँ पे थोड़ा sorry gas carriers का थोड़ा सा procedure और अलग है. So let's see. First of all पहले तो ये how this gas is transported. Now development of transportation of gas, of course it is coming from late 20s. Transportation of liquefied gas in bulk started, and in the very beginning it was the transportation of propane and butane in fully pressurized tanks. जैसे आपका LPG सिलेंडर है, उसके अंदर भी क्या गैस इज इन अ लिक्विड फॉर्म बट अंडर हाई प्रेशर. So around 59 semi-pressurized ships entered market and liquefied gas was now transported. अब हमारी जो LPG जो आप घर में सिलेंडर यूज़ करते हो that is at normal temperature but under high pressure. But certain gases they cannot be liquefied even under high pressure, but they can be liquefied by lowering the temperatures. So 63 by 63 1963 fully refrigerated ships for LPG, LNG, certain chemical gases were in service, and liquefied gas is divided into basically different groups based on their boiling point, chemical binding, toxicity, flammability, and different groups of gases that led to different types of gas carriers. Gases हैं, सारी gases under high pressure नहीं carry की जा सकती. Certain gases are carried under low temperatures. So इसके लिए different type of ships came. So this is again a big research. Lot of research was done, and then they found that yes, what we see today, these ships, they are typically very specialized ships. Sea transport of liquid gases in bulk is internationally regulated with regard to safety through standards established by IMO and of course your gas carrier codes. So हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी के लिए वी हैव द कोड्स. इसके लिए भी IGC कोड है, इंटरनेशनल गैस कैरियर्स कोड. Now for economical marine transportation, gas is carried in a liquefied state. Why? As a liquid, the volume to weight ratio at atmospheric pressure is in the range of 600 to 650 times less than in a gaseous state. कि अगर आपको गैस को गैस ही कैरी करना है, then you need a very huge ship, huge tanks, 600 times bigger as compared to if we carry this gas in a liquefied state. So liquefaction जो है गैस की अगर हो गई, then we carry this gas in a liquid form. तो उसके लिए आपको नॉर्मल आपका जो शिप साइज है it is about 650 times smaller as compared to if I have to carry this gas in a gaseous state. So temperature at which a gas condenses is a function of its pressure. A combination of pressurizing and cooling is therefore fundamental to gas carrier design. कि या तो आप गैस को इतने प्रेशर पे करेंगे it gets changed into the liquid, or we cool it to such a temperature that it gets converted to liquid and then we transport. So some ships carry gases liquefied under high pressure and others under refrigeration. So again, relative densities of gases are low. Between 0.4 methane and 0.97 VCM is a vinyl chloride monomer which is used for making your PVC particles and all that. The cargo carrying capability is therefore more related to volume capacity than the dead weight capacity, and the cargo capacity usually quoted in cubic meters of a cargo tank volume. तो ये आपके basically gas carriers के basic things are there. Most significant cargoes in terms of tonnages, for which all gases are basically transported: methane, what we call LNG, LPG is basically butane, propane, and mixture of these, and ammonia. Other cargoes of commercial significance, these gases are there: butadiene, butylene, ethylene, propylene, and vinyl chloride. So apart from this ethylene and methane, all gases can exist as liquids at normal ambient temperatures. That means under high pressure.
So they may be therefore be transported in pressurized cargo containment systems at any temperature up to highest expected ambient temperature. So no effect. These tanks are of course strong enough. जब हाई प्रेशर पे करना है, आपने देखा आपका एलपीजी सिलेंडर और गैस वाला ले जाता है, कहाँ ऊपर से फेंकता है नीचे. So these cylinders are very thick, heavy, thick metal के बने होते हैं. So critical temperatures for ethylene, LNG are below normal ambient temperatures. Above the critical temperature, gas cannot be transformed into a liquid. So अगर आप मीथेन या LNG को देखिए, it is basically carried in a fully refrigerated या semi pressurized ships में, because normally आपकी जो मीथेन LNG it is carried at -160 degree temperature. इतने लो टेम्परेचर पे it gets converted into liquid and then it is carried at such low temperatures. So यही consideration थी. We let the options to carriage conditions कि कौन सी गैस, some gas is fully pressurized, some gas is semi pressurized or fully refrigerated. So all these gases are carried at different type of ships. Some ships are fully pressurized type of ships, some are semi pressurized, some are fully refrigerated. अब इसके लिए जो मटेरियल्स है जिससे ये शिप्स के टैंक्स को बनना है, जहाँ पे गैस कैरी करनी है, तो अगेन दे शुड बी रेजिस्टेंट टू एनी करोसिव एक्शन. ये भी सारी इसकी डिटेल आपके चैप्टर 17 आईजीसी कोड में है कि कौन से मेटल जो हैं वो इन टैंक्स को सूटेबल हैं. अदरवाइज इवन अगर आप स्टेनलेस स्टील टैंक भी देखिए, सो सच अ लो टेम्परेचर इट बिकम्स वेरी ब्रिटल. अदरवाइज आपका स्टेनलेस स्टील टैंक है, यस इट कैन नॉट ब्रेक, बट जब उसका टेम्परेचर -100 या -160 ले जाइए, देन थोड़ी सी भी उसको आपने कुछ भी किया, इट विल ब्रेक. इट जस्ट ब्रेक्स लाइक आपका खाने वाला पापड़ हो, दैट इज कॉल्ड अ ब्रिटलनेस. इट बिकम्स द मेटल बिकम्स वेरी ब्रिटल, इट ब्रेक्स लाइक अ पापड़. डक्टिलिटी खत्म हो जाती है उसकी. Some basic definitions, of course you know, gas is a liquid with vapor pressure exceeding 2.8 bar at 37.8 is known as the gas. Boiling point is the normal boiling point is the temperature at which or in which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. What we call is the boiling point of a gas. Cargo area as simple, जैसे हमने टैंकर्स पे देखा है कि जो आपका जहाँ पे भी है डेक, टैंक्स, पाइपलाइंस, all other area जहाँ पे भी cargo vapors are likely to be present, what we call is a cargo area. And cargo containment system, arrangement for containment of cargo, including where fitted primary and secondary barriers associated with insulation. So basically cargo containment is your tanks. And gas dangerous space or zone, a space or zone within a ship's cargo area which is designated as likely to contain flammable vapor and which is not equipped with approved arrangements to ensure the atmosphere is maintained in a safe condition, that we call a gas dangerous space. And gas safe space on a ship not designated as a gas dangerous space. Tankers पे भी है flammable, dangerous और safe zones. इसीलिए हम स्मोकिंग भी जाए designated area में allow करते हैं, not in the dangerous areas. Hold space, space enclosed by ship structure in which cargo containment system is situated. And interbarrier space, अगर आप इसकी फिगर देखिए, so these are basically your tanks inside the hull. So this is a very basic thing. This is your hold space between the tank and the आपका जो hull space है, इसे कहते हैं होल्ड. दिस इज द इंसुलेशन, फोम इंसुलेशन. अगेन प्राइमरी बैरियर, ये टैंक के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द प्राइमरी बैरियर. एंड ऑफ कोर्स द शिप साइड फॉर्म्स द सेकेंडरी बैरियर, कि यहाँ से अगर कार्गो लीक भी करता है, सो डेफिनेटली देयर इज अनदर बैरियर व्हिच विल स्टॉप दिस कार्गो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. MAVS is very common to this gas carriers. MAVS is the abbreviation for maximum allowable relief valve setting on the ship's cargo tanks, as stated on the ship's certificate of fitness. कि कितना उसकी रिलीफ वाला, कितने प्रेशर पे ये वॉल्व जो है उठेगा, दैट वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस. प्राइमरी बैरियर, सेकेंडरी बैरियर आपने देख लिया. ये टैंक्स के अंदर उसकी फर्स्ट लेयर है. तो गैस कैरियर्स लाइक अ थर्मस बॉटल. हमारी थर्मस बॉटल क्या है, उसमें भी दो स्किन है बीच में, उसमें चाहे वैक्यूम रखा है, चाहे एयर रखी है, या इसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई इंसुलेशन डाल देते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर उसी तरह मेंटेन रहे.
tank dome, again it is not permitted for cargo pump room to be placed below the upper deck, or may cargo pipelines be run beneath the deck level. So सारा कुछ इसका ऊपर ही होता है. Therefore deep well or submersible pumps must be used for cargo discharge, and pipelines for cargo tanks must be taken through this cargo tank dome which penetrates the deck. So tank dome आपने सारे देखे होंगे कि yes, उन्हीं के बीच में से pipeline, submersible pumps, they all this pass. So that is what we call the cargo tanks. अब आगे इसके hazards. यार बेसिकली ये जो गैस कैरियर्स हैं या गैस इन लिक्विफाइड गैसेस हैं, इनके डेंजर्स क्या है. सबसे पहले द मोमेंट वी टॉक अबाउट एनी गैस वी कम टू द फ्लेमेबिलिटी, एंड आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी थॉरोली फेमिलियर विद फ्लेमेबिलिटी. टॉक्सिसिटी, एस्फिक्सिया, सफोकेशन. सफोकेशन मीन्स ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो यू स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड. तो जैसे जैसे गैस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन वो कम होती जाएगी. Another danger on these ships, low temperature, frostbite. You are carrying gases at very low temperature. So pipeline, any structure, अगर वो covered नहीं है, उसको touch किया तो it will burn your hand like your heat burns the hand. So frostbite is also similar to that. Such a low temperature will burn your skin. Chemical burns. Flammability we all know that it is the vapors of all these liquefied gases which are easily ignited. So it is not the liquid. So एक और advantage है कि अब आप इसको liquefied form में carry कर रहे हो, and we are controlling the atmosphere. Now if you see this gas, for burning, for ignition, it needs oxygen. अगर आप ऑक्सीजन टोटली निकाल दीजिए, so कितनी भी हाईली फ्लेमेबल गैस है, if there is no oxygen, आप चाहे जितनी मर्जी उसमें फ्लेम डाल दीजिए, कुछ भी हो, गैस विल नॉट बर्न. डेफिनेटली इट विल नॉट बर्न एट ऑल. इट इज ओनली इट नीड्स ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो मोर देन 11%. देन ओनली this gas will ignite. So it is the gas basically first gets converted to vapors. These vapors mix with your oxygen, then the ignition takes place. So again very rapid vaporization of spilled liquid gases. क्या ये गैस जब आपका liquid गैस है, जैसे ये spill होगी it will get converted to immediately to vapors and then mixing with the, so chances of ignition following a spill of liquid gas is much greater for this reason. So इसीलिए आपको ये जो एरिया है, आपके टैंक एरिया, डेक एरिया, टर्मिनल, एवरीथिंग हैज़ टू बी टोटली, जिसे कहते हैं नो स्मोकिंग जोन, टोटली इग्निशन फ्री जोन. कोई स्पार्क कुछ नहीं होना चाहिए उसमें. थोड़ी सी भी गैस स्पिल हुई, लिक्विड स्पिल हुआ, इट इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड टू वेपर्स, मिक्स विद ऑक्सीजन एंड कैन कॉज फायर. Toxicity, of course we have studied cargoes are toxic, can cause temporary permanent health hazard, irritation, tissue damage, impairment. Such hazards may result from skin or open wound contact or inhalation, ingestion. इनहेल करने से भी, कॉन्टैक्ट से भी टॉक्सिसिटी जो है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग टुडे. Contact with cargo liquid vapor should be avoided. Again उसके लिए precautions, of course it is written, you can go through. Very simple. toxicity है protective clothing, क्या मैंने उसको टच नहीं करना, breathing apparatus inhale नहीं करना, so we all know that. Next hazard is asphyxia, suffocation. Suffocation, how these gases can create. Human body needs 21% oxygen, isn't it? However, in a gas-free atmosphere, somewhat less oxygen can support life. बट अगेन 90% से कम हुई तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि जिस एरिया में, जिस टैंक में ये गैस ज़्यादा होगी, नेचुरली ऑक्सीजन कम होगी, सो इट हैज़ दैट इफेक्ट ऑफ सफोकेशन एंड द पर्सन कैन डेफिनेटली डाई. Below 16% of non-consciousness takes place rapidly and victim is not moved quickly, permanent brain damage and death can result. So जहाँ पे गैसेज होंगी वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन. चलो ये तो हो गया आपका एस्फिक्सिया. मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना. एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑल्सो, इनहेलिंग सर्टन वेपर्स, आपको एक किस्म की बेहोश जैसा कर दें.
Example, ethylene oxide may cause loss of consciousness due to effects upon the nervous system. So certain gases have got a anesthetic effect. And इससे क्या होता है, देखा नहीं, कहीं आपको ऑपरेशन करना है, किसी स्किन को काटना है तो डॉक्टर गिव्स यू एनेस्थीसिया, सुन कर देता है उस जगह. Some of these gases, they have this type of effect. An unconscious person may react to sensory stimuli but can only be roused with great difficulty. Anesthetic vapors hazards can be avoided by use of कार्गो वेपर डिटेक्शन इक्विपमेंट एंड ब्रीदिंग apparatus. अगर हमें इसके प्रॉपर्टीज पता है कि यस इट हैज गॉट दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, वी कैन डेफिनेटली यूज ब्रीदिंग apparatus और डू नॉट इनहेल these vapors. Another one, frost bite. Frost bite मैंने आपको बताया सिंपल. Any refrigeration system, if you see AC system you see on the ship, जहाँ पे प्लांट लगा हो, there's a very cold refrigerant is circulating in the pipes. R22 या फ्रेऑन वगैरह जो पहले कहते थे. नाउ ये जो गैस है, गैस ये जो कोल्ड गैस पाइप में जा रही है, द पाइप्स बिकम सो कोल्ड, अगर आपने उसको टच किया, समटाइम इंजीनियर्स गेट दैट बर्न्स. सो दीज पाइप्स आर सो कोल्ड, अगर आपका हाथ टच किया, इट इज इक्विवेलेंट टू लाइक टचिंग अ हॉट पाइप. Frostbite is same. Extreme coldness of some liquefied gases in itself is a significant hazard. If the skin is exposed to severe cold, tissue becomes frozen. Danger is ever present in gas terminals and on a ship handling fully refrigerated cargoes. You can imagine minus 100, minus 160 degree temperature. You can imagine how cold it must be. It won't give chance to anything. So इसके लिए proper protective clothing. And इसके symptoms again extreme pain, confusion and severe shock. And इसकी एक और है, frostbite का है कि ये आपके cells को it kills the cell, your cells start becoming dead. So there is a disease called gangrene. So frostbite is dangerous कि अगर आपने कुछ किया, skin initially becomes red, turns white, affected area usually painless and affected area is hard to touch. If the area is left untreated, the tissue will die and gangrene may occur. So gangrene is basically dying of your tissues. It starts. So then sometimes they have to ampute. Otherwise वो पूरी body में फैल जाता है. So frostbite is again a very different thing. So I am not going to touch the treatments. आप इसको पढ़ लीजिए. Next is your chemical burns. तो आपके लिए आंसर के लिए yes questions normally what are the various hazards associated with the liquefied gases. So these steps are there. You don't have to write the treatment. You just say. If he says what are measures, that few measures you can start. You can write proper PPE, proper kits, proper respiratories or self-contained breathing apparatus अगर आपको expose होना है. Chemical burns can be caused by ammonia, chlorine, ethylene oxide and propylene oxide. So these gases have got a chemical. These gases are known as chemical gases. And in case symptoms is similar to burns by fire, except the product may be absorbed through the skin, causing toxic side effects. Chemical burning is particularly damaging to eyes. Simple हमने देखा, chemical अगर किसी की eyes में जाता है, isn't it? It can destroy the eyes. So lot of time you have seen जहाँ पे ऐसी danger हो, we all wear goggles, ताकि chemical या कोई चीज़ इसका spray या vapor जो है skin या eyes में नहीं जाने चाहिए. Be very careful. Burning pain, redness, irritating, blistering, loss of skin and toxic poisoning. Chemicals के अपने dangers. Now other hazards of these cargoes are reactivity. अब ठीक है, cargoes तो हमने देख लिया, पढ़ लिया कि okay we are carrying one gas, no problem. Liquefied gas or liquefied gas cargo may react in number of ways with water. अब आपके tanks में अगर पानी है, sometimes it reacts with water. They form hydrates with itself, with air, another cargo or with other materials. So it can react with air, it can react with water, it can react with other materials. So we never know till it is known to us that this particular cargo or this particular liquefied gas or this liquid gas can react with these things. So of course we will see this. Hydrate formation के लिए आपको tanks को कैसे clean करना पड़ता है. There should not be any water at all. It is like something like a ice formation. जब हम गैस को कूल कर रहे हैं, -100 पे ले जा रहे हैं, तो कोई भी वाटर वेपर अंदर हुआ हो तो एकदम आइस, हार्ड आइस बन जाए.
दैट इज व्हाट वी कॉल द हाइड्रेट्स। पंप्स को डैमेज कर सकता है, किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज कार्गो अगर उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आ गए। So reaction with water, what we call hydrate formation, some hydrocarbon cargos will combine with water under certain conditions to produce a substance known as hydrate, resembling crushed ice or slush. So water for hydrate formation can come from purged vapors with an incorrect dew point, water in the cargo system, or water dissolved in the cargo. So this can create problems for loading discharging. So इसके लिए care should be taken to ensure dew point of any purged vapor or inert gas used is suitable for the cargo concerned, and water is excluded from the entire cargo system, not even a drop. Hydrates can cause pumps to cease, equipment to malfunction, so care should be taken to prevent this reaction with water. Means pani hona hi nahi chahiye. So of course the people who supply cargo, they will also supply because it is already coming at such a low temperature. So certain cargoes like LPGs may contain traces of water when loaded. So it may be permissible in such cargoes to prevent hydrate formation by adding small quantities of antifreeze. But we will not do that. It is again the shippers, if they want to add anything, they can. So from our side we don't do anything. That agar ye So again for LPG, small dose of antifreeze may be permissible, but for chemical cargoes, addition of 1 liter per 200 tons could make the cargo commercially valueless. So chemical cargoes में, of course, we don't touch, we don't add anything. It is whatever they want to treat, they want to do, they want to stabilize, कुछ भी कर सकते हैं. It is their problem. So but ये है कि yes, हमें थोड़ी knowledge होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ इसमें हुई, कार्गो खराब हो सकती है. सेल्फ रिएक्शन, जैसे हमने केमिकल्स में पढ़ा है, यहाँ पे भी सर्टन गैसेस कैन रिएक्ट, दे कैन हैव सेल्फ रिएक्शन. सम कार्गोज में रिएक्ट. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल्फ रिएक्शन इज, जैसे उसमें थी पॉलीमराइजेशन. केमिकल्स में भी है. केमिकल्स आल्सो क्या, वो तो लिक्विड केमिकल्स हैं यही, विच मे बी इनिशिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर कार्गोज और बाय सर्टन मेटल्स. सो पॉलीमराइजेशन नॉर्मली प्रोड्यूसेस हीट. वो हमने देख लिया. यस, इफ देयर इज सम अदर कार्गो, सम स्मॉल क्वांटिटीज और सम इम्प्योरिटीज, पॉलीमराइजेशन सबके साथ नहीं है, बट सर्टन गैसेस दे हैव दिस, that they can start reacting and start polymerization, and then of course cargo will start heating up. Now if these type of cargos are there, then they are to be carried under inert gas blanket so that they don't mix, they don't start with reacting with any air or anything else. So normally we carry under nitrogen blanket or inhibited. Inhibited means some chemical is added so that this reaction doesn't start. So in case अगर उसके अंदर कुछ डाला है, for this inhibitor डाला है, तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी कब तक वो रहेगा, कब तक वो इफेक्टिव है, and how long it is expected to remain effective. Action to be taken during the voyage. So of course stewards are master, they know क्या कार्गो है क्या नहीं है. तो आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि यस, सेल्फ रिएक्शन में कार्गोस कैन अंडरगो पॉलीमराइजेशन. उसको रोकने के लिए इनहिबिटर्स आर एडेड. ये तो था इनहिबिशन का हमने पढ़ लिया. रिएक्शन विद एयर, सम कार्गोस कैन रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म अनस्टेबल ऑक्सीजन कंपाउंड्स व्हिच कुड कॉज एक्सप्लोजन. These cargoes are to be either inhibited or carried under nitrogen or other. So अगर उसका रिएक्शन है एयर से, तो हमारे पास सिंपल है, या टैंक में एयर होनी नहीं चाहिए, टोटली इनर्ट कर देंगे हम उसको नाइट्रोजन से. तो यही चीज़ थी कि अगर आप एक टैंक में टोटल 100% नाइट्रोजन भर देते एंड उसके बाद आप यू पुट दिस वेरी फ्लेमेबल गैस एंड देन इवन यू पुट अ स्पार्क, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एयर, देयर इज नो ऑक्सीजन. सो हाईली फ्लेमेबल गैस ऑल्सो लाइक योर मीथेन, ब्यूटेन, जल ही नहीं सकती. Care should be taken to observe the shippers instructions. Yes, अगर ये reactive with air है
तो इसको कैसे एटमॉस्फेयर में कैरी करना है। रिएक्शन विद अदर कार्गोज, सर्टन कार्गोज कैन रिएक्ट डेंजरसली विद अनदर, दे शुड बी प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग यूजिंग सेपरेट पाइपिंग वेंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे टैंकर्स की तरह नहीं है कि कॉमन एक ही लाइन है अपनी आईजी की, या जहाँ से सेम सारे टैंक्स के वेपर्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। नो, ये डिफरेंट टैंक्स, डिफरेंट पाइपिंग, डिफरेंट वेंटिंग टाइप ऑफ सिस्टम इज देयर। So data sheets lists material which should not be allowed to come in contact with the cargo. Material used in this cargo system must be compatible with cargoes to be carried, and care should be taken. No incompatible materials are used or introduced. Example gaskets and all that जो react कर सकती हैं वो टैंक में नहीं होनी चाहिए. Reaction can occur between cargo and purge vapors of poor quality. For example, IG आपने डाली है जिसके अंदर CO2 नॉर्मल हम जो टैंकर्स में यूज करते हैं, एंड दिस CO2 कैन रिएक्ट एंड कैन कॉज कार्बोनेट फॉर्मेशन विद अमोनिया. So reaction can also occur between compressor lubricating oils and some cargoes resulting in blockage and damage. So अमोनिया के साथ हम इनर्ट गैस नहीं यूज कर सकते, CO2 will react with this. चलो corrosivity, simple, chemical cargoes, acids, some cargoes inhibitors may be corrosive. So IMO requires material used in cargo system to be resistant to corrosion by cargo. So therefore आपके जो कार्गो जो टैंक्स की कंस्ट्रक्शन है, टैंक में जो मटेरियल है उसको पहले से ही इसी ढंग से देख के बनाया जाता है. You are going to carry these cargos, so the tank material will not react. Corrosive liquids can also attack human tissue. केमिकल में हमने पढ़ा, इसके लिए भी हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट यू कैन यूज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. ये नहीं कि वो लिक्विड गैस है तो हम उसको कहें कुछ नहीं, वैसे तो बाय द टाइम यू इट कम्स आउट इट विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड टू वेपर्स, बट उसके वेपर्स भी रिएक्टिव हो सकते हैं, दे कैन बी कोरोसिव ऑल्सो. लो टेम्परेचर इफेक्ट्स दैट हमने देख लिया, लिक्विफाइड गैस आर ऑफन शिफ्ट एट लो टेम्परेचर्स. The temperature sensing equipment is well maintained and accurately calibrated. The low temperature के hazards क्या हैं? Most metals alloy become stronger, but less ductile at low temperatures. That is, tensile and yield strength increase, but material becomes brittle. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्टेनलेस स्टील है, वैसे तो आप उसको कुछ भी कीजिए और टूटेगा नहीं, but when it is kept in a very low temperature then it becomes brittle. तो थोड़ा सा भी इसको कुछ लगा then it just breaks, and because the reduction in temperature changes the material's crystal structure. So this is basically of course metallurgy में है, तो हमने तो यहाँ metallurgy नहीं पढ़नी. So metallurgy of course is that इस metal के tanks बनाए जाते हैं which can stand such a low temperatures. -160 पे कैरी करना है तो definitely टुडे दिस इज व्हाट द रिसर्च इज, कौन सा मेटल जो है इस टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा. स्पिलेज, केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ लो टेम्परेचर कार्गो. Of course these ships are very carefully designed so there is no spillage, but it is possible. It's like liquid ऑयल टैंकर्स, मैनीफोल्ड, जॉइंट्स, पाइपिंग में जॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी स्पिलेज होने के चांसेस हैं. If spillage does occur, source should be first isolated and spilled liquid dispersed. वो तो वैसे ही उड़ जाएगा. Cool down, cargo systems are designed to withstand certain service temperatures. If this is below the ambient temperature, the system has to be cooled down. अब अगर हमने कार्गो लो टेम्परेचर पे कैरी करना है, ये नहीं है कि हमारे टैंक्स नॉर्मल टेम्परेचर पे है, दे मे बी रेजिस्टेंट टू द लो टेम्परेचर, डजंट मेक अ डिफरेंस. बट अगर हम नॉर्मल टैंक टेम्परेचर पे सडनली -100 डिग्री का कार्गो लोड करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली थर्मोस्टेसिस विल टेक प्लेस. टैंक क्रैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए जब आप लोडिंग इसका प्रोसीजर देखोगे, यू विल सी दैट the tanks are normally cooled down before loading this cargo. तो उसका भी प्रोसेस 10 degrees per hour. You can't load suddenly from 35 degree plus से -100 लेके जाना है, ये
तो है नहीं कि आपके को कोई ऐसी मशीन है इमीडिएटली वो कार्गो टैंक के टेम्परेचर को ठंडा कर दे। सो लॉट ऑफ टाइम व्हेन द शिप इज़ न्यू, फर्स्ट टाइम उसको ठंडा करने के लिए 16-18 आवर्स शिप इज़ अलॉन्ग साइड जस्ट कूलिंग द टैंक्स। तो इसके लिए इनकी जो कूलिंग है दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। आइस फॉर्मेशन अगेन सेम लाइक हाइड्रेट फॉर्मेशन। कार्गो में आपकी इनर्ट गैस में कहीं पे भी वाटर वेपर हुआ, यू हैव दैट आइस फॉर्मेशन। अब ये रोल ओवर जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, रोल ओवर क्या होता है? नाउ देयर इज द बिगेस्ट हैजर्ड ऑफ दिस रोल ओवर इन दिस गैस कैरियर्स। रोल ओवर इज अगेन बेसिकली अ फिनोमिना विच कैन अकर। कैसे अकर करता है? रोल ओवर इज अ स्पॉन्टेनियस रैपिड मिक्सिंग प्रोसेस which occurs in large tanks as a result of density inversion। अब density means आपका ये liquid कार्गो एक टैंक में है, उसके जो टॉप सर्फेस है, टॉप सर्फेस ऑफ दिस लिक्विड स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। हो सकता है उसमें इम्प्योरिटीज हो, कुछ भी हो। अब जब ये टॉप सरफेस जो है वेपोराइज करेगा तो उसकी डेंसिटी में फ़र्क आएगा, isn't it? If something, some light material उसमें से वेपोराइज हो गया तो जो टॉप सरफेस का लिक्विड है वो थोड़ा डेंस होता जाएगा, थिक होता जाएगा। वेयर एज द लिक्विड जस्ट एडजेसेंट टू दिस टॉप सरफेस, वो तो उसी डेंसिटी पे है, वो तो उतना ही लेस डेंस है। So this is called a layer formation. So you will have some sort of a layer is forming कि top layer जो है liquid की वो थोड़ी ज़्यादा dense होगी, नीचे की लेयर जो है वो नॉर्मल उसी तरह की उसी तरह। टॉप लेयर क्यों हुई? बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें से कुछ मटेरियल था, कोई इम्प्योरिटी थी, मोर वॉलेटाइल थी, वो निकल गई। So this is called stratification. This layer formation is known as stratification. So stratification develops when the liquid layer adjacent to the liquid surface becomes denser than the layers beneath due to boil off. Boil off means vaporization of the lighter fractions from the cargo. Now this obviously is an unstable situation कि एक आपके पास टॉप लेयर और ज़्यादा डेंस है, नीचे की लेस है, so they have a tendency to mix. एंड ये अनस्टेबल सिचुएशन जो है इट रिलीव्स इटसेल्फ विद अ सडन मिक्सिंग। एंड ये जो सडन मिक्सिंग है इसको आप कहते हो रोल ओवर हैज टेकन प्लेस। कि ये दो डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ, एक दो लेयर फॉर्मेशन हुई, टॉप लेयर ज़्यादा डेंस, नीचे वाली वो है, एंड सडनली दिस टू लेयर्स दे स्टार्ट मिक्सिंग अप एंड दिस इज व्हाट वी call it rollover. And liquid hydrocarbons are most prone to this rollover, especially cryogenic liquids. Cryogenic means refrigerated liquids. So cryogenic liquids are more prone to this. LNG most likely by virtue of its impurities. LNG basically क्या है? मीथेन। मीथेन जब नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसके साथ और भी कुछ ना कुछ आएगा। ये तो है नहीं कि प्योर मीथेन ही अर्थ के अंदर से निकलेगी, और कोई गैस भी उसके साथ हो सकती है। अब जब आपने उसको कंप्रेस लिक्विफाई किया तो उसके साथ वो सारी इम्प्योरिटीज भी लिक्विफाई हो। तो इसके लिए इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर अंडर विच इट इज स्टोर्ड क्लोज टू द सैचुरेशन टेम्परेचर एज स्टोरेज प्रेशर्स। सो इफ द कार्गो इज स्टोर्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एंड द बॉयल ऑफ इज रिमूव्ड, evaporation can cause a slight increase in density and a reduction of temperature near the surface. इसके लिए the liquid at top of the tank is therefore marginally heavier than the liquid in the lower levels. And once this layer formation or stratification has developed, rollover can occur. अब इसका solution क्या है? कार्गो तो कैरी करना है, उसका डेंजर है कि if the ship is stationary, एंकर पे है, कार्गो स्टेशनरी है, then there is a possibility. तो इसके लिए द इन्वर्शन विल बी अकम्पनीड बाय वायलेंट एवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेपर एंड अ वेरी रियल रिस्क ऑफ टैंक ओवर प्रेशर। अब जब ये मिक्स होगा, जिसे हम कहते हैं रोल ओवर की, ये ऊपर की लेयर डेंसर लेयर नीचे वाले से मिक्स होगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ हाई प्रेशर विल डेवलप, लॉट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेपर विल फॉर्म एंड विच विल क्रिएट अ हाई प्रेशर इन द टैंक। So rollover has been experienced ashore and may happen on a ship that has been anchored for some time. So in such circumstances, the tank content should be circulated daily by cargo pumps. So इसका सिंपल सोल्यूशन है कि हम उसको रिसर्कुलेट करें, कार्गो मिक्स होता रहे,
फिर ये चांसेस जो है रोल ओवर के कम हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस गैस कैरियर्स में कोई आपको पूछे कि अरे रोल ओवर क्या फिनोमिना है, आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड सोल्यूशन कि सर ये शिप इज स्टेशनरी, स्टैग्नेंट है कार्गो, उसको रिसर्कुलेट करेंगे डेली तो ये रोल ओवर के चांसेस कम है, ओवर प्रेशराइजिंग के चांसेस कम है। And it can also occur if similar or compatible cargoes of different densities are put in the same tank. ये भी हो सकता है। ओके, ये तो थे आपके हैजर्ड्स। अब आपके आगे गैस कैरियर टाइप्स। तो आज हम यहीं तक करेंगे गैस कैरियर टाइप्स, टाइम इज लेस। सो गैस कैरियर टाइप्स में क्या है कि बेसिकली कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज: फुली प्रेशराइज्ड, सेमी प्रेशराइज्ड, ethylene ships, fully refrigerated LPG ships and LNG ships. So these are the basically type of gas carriers. The first three type of ships, what we have this fully pressurized, semi pressurized, ethylene type of ships, most suitable for shipment of smaller size of cargoes of LPG and chemical gases. And this is normally accompanied on the short sea route, regional routes pe. Fully refrigerated ships are used extensively for carriage of large size cargoes of LPG ammonia on deep sea routes. Fully pressurized ships क्या हुआ? Ships are the simplest of all gas carriers. They carry cargoes at ambient temperature, normal temperature. अब आपको ये normal temperature पे, so they are not carrying gas, they are carrying that liquid gas. But वो liquefied कैसे किया? High pressure पे। तो इसके लिए ये जो आपका टैंक का स्ट्रक्चर है दैट शुड बी एबल टू स्टैंड हाई प्रेशर। दैट मीन्स उसकी जो थिकनेस है, टैंक जो है थिक होंगे, मोटे स्टील के बने होंगे, सो दैट दे कैन स्टैंड द प्रेशर। सो दे आर फिटेड विद टाइप सी टैंक्स, प्रेशर वेसल्स जिसे हम कहते हैं, फैब्रिकेटेड इन कार्बन स्टील हैविंग अ टिपिकल डिजाइन प्रेशर ऑफ अबाउट 18 बार। एंड शिप्स विद हायर डिजाइन प्रेशर आल्सो इन सर्विस विद फ्यू शिप्स कैन एक्सेप्ट कार्गोज अप टू 20 बार प्रेशर। 18 to 20 बार का प्रेशर के लिए द टैंक्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, नो थर्मल इंसुलेशन और रीलिक्विफिकेशन प्लांट नेसेसरीज है ही नहीं है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कैरी कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर डिज़ाइन कार्गो टैंक्स आर एक्सट्रीमली हैवी, नेचुरली थिक स्टील के हैं तो हैवी होंगे। सो एज अ रिजल्ट दी शिप्स टेंड टू बी स्मॉल, कैपेसिटी 4 to 6,000। बैलास्ट ऑफ कोर्स डबल बॉटम में है। अब आपके नेक्स्ट आगे सेमी प्रेशराइज। सेमी प्रेशराइज मीन्स ये वो थोड़े कम प्रेशर के लिए बनाए होंगे। सेमी प्रेशराइज शिप्स आर सिमिलर टू फुली प्रेशराइज शिप्स। दे हैव टाइप सी टैंक्स। इन दिस केस द प्रेशर वेसल्स डिजाइन टैंक्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 5 to 7 बार compared to fully pressurized ships. So therefore reduction in tank thickness, isn't it? But this is at the cost of refrigeration plant. Of semi pressurized means तो थोड़ा सा pressurized and also low temperatures. So refrigeration भी आ गई। Certain gases को आपने refrigerate भी किया, तब उनको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, and plus थोड़ा सा प्रेशर भी ये टैंक स्टैंड कर सकते हैं। So these type of gas carriers evolved as optimum means of transporting wide variety of gases, LPG, vinyl chloride, polypropylene, polypropylene, butadiene. So these most frequently found in the Med and North Europe. वहाँ पे छोटे-छोटे coastal trade के लिए these ships are there. Flexibility as ships, but इनका size about 3,000 to 20,000 मीटर क्यूब इनकी कैपेसिटी रहती है। And they do not require secondary barrier. Tanks are usually made up of low temperature steels to provide carriage temperature up to -48. तो यहाँ पे क्या है कि कार्गो आपका रेफ्रिजरेटेड भी है, प्लस थोड़ा बहुत अंदर हाई प्रेशर भी है। Alternately, they can be made for, of course, special steels, special alloyed steels or aluminium to allow for carriage of ethylene at -104. Ethylene at -104. तो ये अगेन इनकी टैंक कंस्ट्रक्शन जो है एज पर द कोड। एथिलीन शिप्स बिल्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रेड, इनकी कैपेसिटी नॉर्मली 1000 to 12,000 मीटर क्यूब। एथिलीन इज नॉर्मली कैरीड इन फुली रेफ्रिजरेटेड कंडीशन। क्यों? -104 पे कैरी करना। टाइप सी प्रेशर वेसल टैंक्स। एंड
thermal insulation and high capacity reliquefaction plants are fitted for this type of ships. So reliquefaction plant भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, किस चीज़ के लिए आपके शिप पे, इन शिप्स पे दिया होता है. कंप्लीट डबल हल for cargoes carried below -55. Fully refrigerated, again carry cargoes at approximately atmospheric pressure. अब तो fully refrigerated है, तो high pressure नहीं है, pressure normal है, but they are of course carrying these liquefied gases at a very low temperature. So 4 different cargo containment systems have been used for these type of ships. Means कि जो आपकी टैंक की जो कंस्ट्रक्शन है for these fully refrigerated ships, of course they are different types. Independent tanks with single hull, independent tanks with double hull, integral tanks incorporating a double hull, and semi-membrane tanks incorporating double hull. So ये तो आपका fully refrigerated ships के लिए these type of tanks are there. And fully refrigerated ships range from 20,000 to 100,000 meter cube. So they are relatively few refrigerated ships between 55 and 70,000. So इनका working pressure तो कम है but low temperatures. And last आपका LNG ships. LNG carriers are specialized type of gas carriers. Why? Because LNG is normally carried at -162. Imagine -162 डिग्री टेम्परेचर क्या होता होगा. एंड इनकी रेंज थोड़ी बड़ी है एंड दे आर टिपिकली ओनली फॉर LNG, not other gases. So they are dedicated to this particular special cargo. So इसकी कैपेसिटी भी 125 135. तो पूरी की पूरी लाइफ अपनी LNG कैरीज में लगा देंगे. इनके अंदर जो टैंक कंस्ट्रक्शन है, जो टैंक्स आर स्पेशल, absolutely special. So these are the basically companies, Gas Transport and Technigas. Both these companies are now merged to one. And ये आपके टाइप ऑफ टैंक्स हैं इन शिप्स में फॉर LNG कैरियर. आपने देखे होंगे एटलीस्ट दूर से कब लिखा था LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. तो बेसिकली LNG है क्या? मीथेन, हाईली फ्लेमेबल. All LNG ships have double hulls throughout their cargo length, which provide adequate space for ballast. And ships fitted with membrane systems have full secondary barrier, and tanks of type B have drip pan type protection. So इनके लिए again secondary barrier की cargo thermos, जैसे मैंने आपको बताया, they are like very heavy thermos. यार अंदर जो कार्गो ठंडा है वो गर्म नहीं होना चाहिए. 1 डिग्री भी गर्म हुआ तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. Characteristic of this is common to all LNG. ये जो LNG है इसके जो वेपर्स अगर डेवलप होते हैं, उन वेपर्स को आप वापस लिक्विफाई नहीं कर सकते. क्यों? -160 पे लिक्विफाई करने के लिए यू नीड अ वेरी बिग प्लांट. तो इसके लिए इसके जो वेपर्स हैं उसको दे आर यूज्ड फॉर फ्यूल इन द इंजन्स. तो इंजन जो शिप्स हैं उसके इंजन में बेसिकली अगर ये जो वेपराइज होता है कार्गो, बॉयल ऑफ जिसे कहते हैं, टैंक में होता है, तो इसे कलेक्ट करके इट इज यूज्ड इन द बॉयलर्स. बॉयलर में क्या है, आपको फ्यूल जलाना है, इसी को बर्न कीजिए, वाटर को हीट करके स्टीम बनानी है, एंड स्टीम से स्टीम टरबाइन. सो LNG शिप्स आर, उनके इंजन्स भी दे आर स्टीम टरबाइंस. ज़्यादा अच्छे प्रूव हो रहे हैं. ठीक है. सो ये आपके थे वेरियस टाइप्स ऑफ दिस type of gas carriers. Hold spaces around cargo tanks are continuously inerted, and LNG carriers have steam turbine propulsion plants. उनकी जो है, तो यहाँ तक we will keep it. इसके hazards क्या हैं, what are the various types of LNG gas carriers. थोड़ा सा टैंक्स के बारे में पढ़ेंगे. लिक्विफिकेशन प्लांट, I think we have one more session with you today this week. Yeah, so we'll continue on Friday. And we'll finish this. In the meantime, I will send you these notes. तो आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, just get a fair amount of idea. गैस कैरियर्स होते क्या हैं, कैसे उनके क्या क्या कंस्ट्रक्शन है. So the guys who are working, उनको तो थोड़ी नॉलेज होगी भी, उनको अच्छा पढ़ना पड़ेगा. जिन्होंने नहीं जाना गैस कैरियर पे, so एग्ज़ाम के लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए. These notes are very vast, काफ़ी डिटेल में लिखे हुए हैं. सो इट इज़ इनफ. कहीं पे आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. चलो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी?
चलो ओके गुड. देन आपकी भी नेक्स्ट क्लास है. आई ऑल्सो गॉट अ नेक्स्ट क्लास, सो वी विल मीट ऑन फ्राइडे. वी विल कंटिन्यू विद दिस. थोड़ा सा रह गया ख़त्म करके, इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं सो वी विल गो फॉर द रिवीजन. नेक्स्ट वीक भी रिवीजन रख लेंगे. आपका 6 से पेपर है, बीच में जितना भी टाइम मिलता है, एनी क्वेश्चन यू हैव ऑन न्यूमेरिकल्स और थ्योरी, प्लीज़ ब्रिंग इट अप, विल डिस्कस इन द क्लास. थोड़ा सा एक दो टॉपिक मैं भी आपके रिवाइज करा दूंगा फॉर द पेपर्स के लिए. ओके, चलो बाय बाय. Thank you, sir. वेलकम वेलकम, बाय बाय.